26 number, confirm that in case of switchover from taxable to exempt transaction, input tax credit is fully restricted. So as an auditor, he has to check whether business entity is transferring, is switching over from taxable supply to exempt supply. Then in case of exempt supply, input tax credit is not available. So whether the business entity has given the same effect in the business or not, that auditor has to verify it. Then auditor has to examine whether the input tax credit availed on capital goods has been reversed in case of supply of capital goods. If capital goods is purchased, then it is used for the business purpose. But now if the same capital goods is supplied, then whatever credit, input tax credit is availed, will be reversed in proportionate basis. The registered person will have to pay an amount equal to input tax credit taken on the said capital goods / plant and machinery, reduced by percentage point specified, or the tax on the transaction value of such goods whichever is higher. So उसको ये बात ध्यान में रखना है एज ए ऑडिटर कि द रजिस्टर्ड पर्सन उसको अमाउंट कितना रिवर्स करना है, परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से, जितना यूज हुआ है, कितना यूज बाकी है, कितना पोर्शन उसका बाकी है, और या उसको सप्लाई करने से क्या उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू है, उस पर जितना टैक्स आया है विच एवर इज हायर उतना उसको रिवर्स करना है. तो ये बात यहाँ पे उसको ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कैपिटल गुड्स का सप्लाई कर दिया जाता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर देना पड़ेगा. Then examine that the entity has done correct classification, especially in case of outward supply, proper GST rates. Wrong classification may lead to litigation, big tax outflow in future, higher litigation cost, indirect tax may become direct tax in the hands of an entity. Also examine all the invoices contain the HSN code as per the correct classification. यानी जो भी गुड्स का क्लासिफिकेशन हुआ है वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर रेट्स हुआ है कि नहीं. जैसे ऐसा तो नहीं हुआ कि जिसपे 28 रेट लगता था जीएसटी का उस पे 18 लगा दिया, या वाइस वर्सा. अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो उससे रिजल्ट क्या होगा, इट मे लीड टू हैवी टैक्स आउटफ्लो इन फ्यूचर, मे लीड टू हायर लिटिगेशन कॉस्ट, केसेस ज्यादा हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स बिकम्स डायरेक्ट टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस एंटिटी. ये सब प्रॉब्लम होगा. तो टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट as a business entity has to do, he has to properly classify each and every goods or services or both, and HSN code should be recorded properly if it is compulsory for them to record the HSN code, harmonized system of nomenclature. Then next point, as a auditor he has to examine the compliance of the provision related to job work. Now whenever the goods or capital goods are sent to job worker, then it can be considered as a supply, but the time limit prescribed for return of goods sent to job worker under the exemption route is 1 year for being sent out for inputs and 3 years for being sent out for capital goods. This time limit is not applicable to molds and dies, jigs, fixtures and tools. यानी अगर कोई जॉब वर्क को गुड्स भेजा है और वो 1 ईयर के लिए सेंड किया गया है और 1 ईयर में वो रिटर्न आ जाएगा, और कैपिटल गुड्स है तो वो टाइम लिमिट है 3 इयर्स. तो अगर इनपुट्स है 1 ईयर में रिटर्न आता है या कैपिटल गुड्स है तो 3 ईयर में रिटर्न आता है, तो इन दैट केस जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन सच काइंड ऑफ सप्लाई. बट दिस टाइम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल टू मोल्ड्स, डाइस, जिग्स, फिक्सचर एंड टूल्स. यानी बात ओवरऑल ये हुआ कि अगर जॉब प्रिंसिपल अपना कोई इनपुट्स जॉब वर्कर को दे रहा है कुछ काम कंप्लीट करवाने के लिए उसका, तो उस काम में उसको सप्लाई कहलाएगा कि नहीं. तो अगर उसको सप्लाई नहीं कहलवाना है तो क्या करवाना पड़ेगा, उसको एग्जाम्पशन से के रूट से जाना है. तो इट शुड बी रिसीव्ड बैक विद इन 1 ईयर इन केस ऑफ इनपुट, एंड in case of capital goods it should be received back within 3 years. अगर ऐसा हुआ है तो then he can claim exemption. Section 19 subsection 2 and section 19 subsection 5 allows the principal to take input tax credit of goods not received by him if the goods are sent
डायरेक्टली टू द जॉब वर्कर प्रीमाइसेस बाय द वेंडर। जैसे इस केस में क्या बोला है कि कभी कभी प्रिंसिपल को गुड्स नहीं मिलता, क्या करता है वेंडर डायरेक्टली जॉब वर्कर को गुड्स सेंड कर देता है। तो इस केस में प्रिंसिपल इज नॉट रिसीविंग एनी टाइप ऑफ गुड्स, so whether principal is eligible for input tax credit, answer is yes. In that case also principal is eligible for input tax credit. So as a auditor he has to check whether the principal has availed the credit in such kind of transactions or not. Then next point, examine the relevant provision regarding input service distributors. ISD में क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है? The input service distributor is permitted to distribute the credit as follow. उनको अगर क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इसी तरह से होना चाहिए, जैसे सेंट्रल टैक्स एज ए सेंट्रल टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स, और इंटीग्रेटेड टैक्स एज इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स। यानी सेंट्रल टैक्स को वो डिस्ट्रीब्यूट सेंट्रल टैक्स या इंटीग्रेटेड टैक्स के तरीके से कर सकता है, और इंटीग्रेटेड टैक्स को इंटीग्रेटेड टैक्स या सेंट्रल टैक्स के तरीके से कर सकता है। ये बात उसको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट में 31 पॉइंट में ये ध्यान रखना है कि वाउज दैट टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन प्रिपेयर्ड विद ऑल द डिटेल्स एज प्रिस्क्राइब्ड। As an auditor, he has to examine the tax invoices. There are different types of invoices like tax invoice, bill of supply, refund voucher, receipt voucher, payment voucher, etc. So, as an auditor, he has to check whether invoices like tax invoices are prepared with prescribed details or not, whether GSTN number of supplier, place of supply, rate of GST, amount of GST, taxable value, gross value, whether reverse charge is applicable or not. All the informations are contained in the invoices or not. As auditor he has to check. If it is not there, then he has to suggest to the business entity that you have to prepare tax invoices in such a way that it will give all the things, all the details about the transaction. Now in next point, reconcile ITC ledger in Tally and GSTR 2A. There must be a complete reconciliation. Till the completion of GST audit, all the supplier must have updated their sales details electronically. That is our ITC detail. यानी एज ए ऑडिटर उसको रिकंसाइल करना है, मीन्स मैच करना है आईटीसी लेजर में और जो टैली में बनाया है और GSTR 2A. What is GSTR 2A? GSTR 2A is nothing but it is a auto-populated details that recipient will get if supplier is supplying GSTR 1. GSTR 1 is for outward supply. जैसे ही वो GSTR 1 फाइल करेगा सप्लायर, तो रेसिपिएंट को GSTR 2A में उसका कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मिल जाएगा, एंड GSTR 4 इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर तो कितना उसने टैक्स पे किया है वो उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे उसको रिकंसाइल करना है, सारी डिटेल्स टैली के साथ मैच करना चाहिए उसका आईटीसी। फिर नेक्स्ट, कंफर्म दैट आईटीसी इवन इन केस ऑफ कैपिटल असेट हैज नाउ बीन टेकन फुल्ली इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। अब आना के जैसे कैपिटल गुड्स है उसमें भी अब आईटीसी पहले ही साल में ले लिया है कि नहीं, वो भी एज ए ऑडिटर उसको चेक करना है। देन while examining import bills and other supporting document, ensure that the basic custom duty, education cess, social welfare surcharge are not considered eligible for ITC. However, IGST and compensation cess are eligible for ITC. यानी जब इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना है तो जो भी बेसिक कस्टम ड्यूटी पे किया है, जो भी एजुकेशन सेस पे किया है एंड सोशल वेलफेयर सरचार्ज पेड इज नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी। इन सब पे आईटीसी नहीं मिलेगा, बट आईटीसी किस पे मिलेगा? आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस आर एलिजिबल फॉर आईटीसी। तो एज ए ऑडिटर उसको चेक करना है कि क्या बिजनेस एंटिटी ने कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, सोशल वेलफेयर सरचार्ज उस पे तो आईटीसी क्लेम नहीं कर लिया, वो उसे चेक करना है। और आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस उस पे आईटीसी लेना है तो लिया है कि नहीं, दैट ही हैज टू चेक। Then in case of import of services, RCM is applicable. In case of export of services, also LTU, letter of undertaking, is required to be submitted without payment of IGST. Kindly examine the same. यानी अगर import है
तो आरसीएम एप्लीकेबल है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इंपोर्टर इज लायबल टू पे जीएसटी टू द डिपार्टमेंट, but in case of export, so in case of export, if supplier wants to export without the payment of IGST, so can he do so? Answer is yes, but if he satisfy the following conditions, following four conditions satisfied, then only he can do the export without IGST. The first condition is location of supplier of service is in India, location of recipient is outside India, place of supply is outside India, payment is received within 6 months in the foreign country. यानी सप्लायर का लोकेशन इंडिया में होना चाहिए, रिसिपिएंट का लोकेशन आउटसाइड इंडिया में होना चाहिए, और प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया में होना चाहिए, और 6 मंथ के अंदर अंदर फॉरेन करेंसी में पेमेंट मिल रहा है। ये चार कंडीशन, ऑल फोर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, then only it will be treated as a export of services and IGST is not payable, otherwise IGST is payable। अगर ऐसा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो फिर उसको IGST भरना पड़ेगा। ये उसका लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में ये सारी बातें उसको लिखनी है कि ये ऑल कंडीशंस, आई एम सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस, तो ही वो IGST का विदाउट पेमेंट वो कर सकता है। Then verify that ISD concept is applicable only in case of input service. For input material or capital goods, ISD concept is not applicable। यानी ISD input service distributors जो concept है वो services के लिए ही applicable है। अगर कोई मटेरियल परचेज किया है या कैपिटल गुड्स के लिए ISD का कंसेप्ट नहीं है। देन एज ए ऑडिटर उसको रिकंसाइल करना है बिटवीन टैली एंड एनुअल रिटर्न, यानी टैली और एनुअल रिटर्न GSTR 9, उसमें टैली के साथ उसको मैच करना है कि सेल्स सोन इन टैली एंड सेल्स दैट इज आउटवर्ड्स सप्लाई सोन इन एनुअल रिटर्न, वेदर दे आर reconciling or whether they are matching or not, purchase or and inward supplies, then ITC availed, ITC used, tax paid by challans, so these things should be reconciled by the auditor। यानी उसको ये सारी चीजें मैच करना है, उसके बाद ही ये आगे बढ़ सकता है। Then next one, e-way bill reconciliation with sales and purchase of goods, that is in case of movement of goods, यानी अगर गुड्स का मूवमेंट है, अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो देन इट शुड बी रिकंसाइल्ड विद ई-वे बिल, यानी जितना भी सेल्स है जितना भी परचेज है उसको ई-वे बिल के साथ मैच करना है, रिकंसाइल करना है एज ए ऑडिटर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज RCM applicability till applicable dates should be examined with 100% perfection। RCM का जितना भी liability है it should be checked with 100% perfection। in case of freight के केस में GST rate is 5%, GTA is applicable, goods transport agency है तो 5% applicable है, तो if we are liable to make payment to GTA, once RCM liability is paid, ITC is always available in case of inward or outward freight। फ्रेट चाहे कोई भी हो, इनवर्ड फ्रेट हो या आउटवर्ड फ्रेट हो, once RCM liability is paid then only ITC is available। यानी पहले पेमेंट करो then you can claim the ITC। The restriction in respect of ITC may be applicable to GTA, not to the entity taking services of GTA। यानी ये रिस्ट्रिक्शन किसके लिए है? जो ITC का रिस्ट्रिक्शन GTA के लिए है, यानी जो GTA का सर्विस ले रहा है उसके लिए नहीं है। Taxes paid under RCM is normally available for ITC in most of the cases। यानी जितना भी taxes paid under RCM is normally available for ITC in most of the cases if input services are used for the business purpose। Pay RCM based on time of supply and avail ITC in the month of payment of RCM। यानी जिस मंथ में RCM का लायबिलिटी पेमेंट किया उसी मंथ में आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे इट and then person can claim the ITC। तो एज ए ऑडिटर ये उसको चेक करना है। Then next point is about block credit, section 17 subsection 5। As you know, any purchase on motor vehicle is totally blocked if sitting capacity is
below the prescribed limit. Examine that the ITC in respect of tax paid on inward services like renting, repairing and maintenance, servicing, insurance of motor vehicle for which ITC is blocked by section 17 subsection 5 is not allowed. That means अगर मोटर कार ब्लॉक है तो उसका कोई भी रेंटिंग है, रिपेयर्स है, मेंटेनेंस है, सर्विसिंग है, इंश्योरेंस है, वो सारी बातें भी ब्लॉक्ड हो जाएगी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। सो एज अ ऑडिटर ये भी उसको चेक करना है कि क्या सही में बिजनेस एंटिटी ने ये सारी चीजें ब्लॉक की है कि नहीं है, या उस पर आईटीसी ले लिया है। अगर ले लिया है तो गलत चीज किया है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। Then next point, further note that the branch transfer outside the state is taxable and should be treated on the same way as a normal sale under the GST laws. But in accounts, while preparing the final statement, it is not a sale as per accounting standard. यहाँ पे ये दोनों में एक कंफ्यूजन है कि जीएसटी में एक ट्रांसफर है तो जीएसटी एप्लीकेबल है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के हिसाब से इफ on one branch is transferring to another branch located in another state, then it will be not treated as a sales as per accounting standard 9, but as per GST law it will be treated as a transfer. Supply includes transfer and GST will be leviable. So same distinguishment has been done by business entity or not, that एज ए ऑडिटर हैज टू चेक, क्या उसको सेल तो कंसीडर नहीं कर दिया बिजनेस एंटिटी ने, वो उसको चेक करना है। एग्जामिन द हाई सी सेल एग्रीमेंट प्रॉपर्ली इन केस ऑफ हाई सी सेल ट्रांजेक्शन which are part of the schedule 3 negative list. Now high C sale transaction means what? Say for example Mr. A is located outside India, Mr. B is located in India. अब Mr. B import करते हैं गुड्स को इंडिया में और वो हाई सी में है, अभी तक कस्टम फ्रंटियर क्रॉस नहीं किया है उसने, और कस्टम फ्रंटियर क्रॉस होगा तो ही आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बट उसने डायरेक्टली उसको सेल कर दिया, थर्ड पर्सन को सी को सेल कर दिया, सो देन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर कंसीडर एज ए हाई सी सेल एग्रीमेंट एंड इट इज कवर्ड अंडर द नेगेटिव लिस्ट. सो दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, यानी उसने इंडिया में अभी तक आया ही नहीं है और डायरेक्टली किसी और पर्सन को सेल कर दिया, तो दैट थर्ड पर्सन इज लायबल, बट दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन बी एंड सी इज नॉट कंसीडर एज ए सप्लाई एंड बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर द नेगेटिव लिस्ट शेड्यूल 3. So once again IC sale agreement means one A is located outside India, B is located in India. Now person located in India importing something फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सो बी ने ए के पास से इंपोर्ट किया, अब बी अभी इंडिया में आया नहीं है, वो गुड्स डायरेक्टली उसने सेल कर दिया सी को, तो वो हाई सी में ही है, एंड देन इन दैट केस इट इज कंसीडर एज ए हाई सी ट्रांजेक्शन और हाई सी सेल एग्रीमेंट, तो इन दैट केस इट इज कवर्ड अंडर द शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट. तो ये इस तरह का ट्रांजेक्शन को एज ए ऑडिटर स्पेशली चेक करना है कि ऐसा ही ट्रीटमेंट दिया है कि नहीं बिजनेस एंटिटी ने. एग्जामिन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ ईच लोकेशन इन ए डिफरेंट स्टेट आफ्टर कीपिंग इन टू द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एंड प्लेस ऑफ बिजनेस. फर्दर एग्जामिन दैट द रजिस्ट्रेशन इज टेकन विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब अंडर द जीएसटी लॉ, यानी उसको चेक करना है कि जो भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लिया है वो एग्रीगेट टर्नओवर और प्लेस ऑफ बिजनेस बराबर है कि नहीं, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस पीपीओबी एपीओबी बराबर शो किया है कि नहीं. अगर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो गया है प्रिस्क्राइब लिमिट से, यानी 20 लाख 10 लाख और 40 लाख वॉट एवर इज द केस एप्लीकेबल, तो उस अगर क्रॉस होने के बाद विद इन स्पेसिफिक टाइम लिमिट में उसने वो रजिस्ट्रेशन ले लिया है कि नहीं, वो भी उसको चेक करना है एज ए ऑडिटर. तो ये सारी बातें उसको चेक करनी है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक करना है, उसमें पीपीओबी चेक करना है, एपीओबी चेक करना है, उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस हो जाता है तो उसने विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं लिया है, वो सारी बातें उसको एग्जामिन करनी है. एग्जामिन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इन डिटेल. अब ये सारे डिटेल्स में चेक करना है. प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, स्टॉक ऑफ गुड्स, input tax credit availed, output tax paid,
एंड पेएबल, यानी ये सारी बातें देखो, कितना स्टॉक है उसके पास, कितना इनवर्ड सप्लाई है, कितना आउटवर्ड सप्लाई है, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना मैन्युफैक्चर हुआ, फिर कितना आउटपुट टैक्स पे किया, पेड कितना किया, पेएबल कितना है, वो सारी बातें उसको डिटेल में चेक करनी है, एग्जामिन करनी है एज अ ऑडिटर। Then management representation later should be obtained from for the technical clarification. Now, if as an auditor he wants some technical clarification for certain matters, then he should obtain management representation later from the authority so that he can get the technical clarification about the things. तो उसको हमेशा it is advisable to obtain management representation later, and then only he can get the technical clarification about different concept. ये जो ये ऑडिटर का उसका काम होता है। Then next one, obtain the confirmation from the debtors and creditor to ensure the genuineness of purchase and sales। उसको परचेज एंड सेल्स का जेन्युइननेस चेक करना है, और जेन्युइननेस बहुत, देयर आर सो मेनी वेज बाय विच ही कैन चेक द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। वो क्रेडिटर और या तो डेटर को कॉल कर सकता है, फिजिकली उनको मिलके भी पूछ सकता है। देयर आर सो मेनी वेज बाय विच ही कैन चेक द परचेज एंड सेल्स जेन्युइननेस। तो उसको एज ए ऑडिटर ये भी चेक करना है, क्योंकि जितना सेल्स बढ़ेगा उतना आउटवर्ड लायबिलिटी, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी, जितना परचेस करेगा उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा मिलने वाला है। तो वो सही में जेन्युइन है कि नहीं, या तो ज्यादा इन्फ्लेटेड परचेस बता दिया है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा मिलेगा, सेल्स ज्यादा बता दिया है तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ जाएगा। तो इस तरह से उसको इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ द परचेज एंड सेल्स। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जामिन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो भी बीआरएस है वो बीआरएस को प्रॉपर्ली उसको चेक करना है, बीआरएस को मींस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉपर्ली चेक करना है। देन एग्जामिन द गुड्स रिसिप्ट नोट, जीआरएन चेक करना है, एंड स्टॉक स्टेटमेंट फॉर द ईयर अंडर ऑडिट। जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उसका जीआरएन, उस साल का स्टॉक स्टेटमेंट उसको चेक करना है। सो उसको स्टॉक का आइडिया आएगा, एंड जीआरएन कितना रिसीव्ड हुआ है गुड्स उसको भी पता चल जाएगा। तो ये एज अ ऑडिटर ये उसको एग्जामिन करना है। देन नेक्स्ट केस में एग्जामिन or carry out the physical verification of inventory and prepare all the reconciliations and give its effects on tax liability accordingly if any difference is found। यानी उसको क्या करना है, सारी इन्वेंटरीज का फिजिकली वेरिफिकेशन अगर करना जरूरी लगता है तो उसको करना है, और उसका टैक्स इफेक्ट भी देना है, और रिकंसाइल करना है what inventory shown in books and what inventory are actually there by doing physical verification, both are matching or not, if any difference is found then it should be reported। जैसे बुक्स में बताया है इन्वेंटरी 5 लाख बट एक्चुअल में 4 लाख ही है, तो दैट मींस देयर इज अ डिफरेंस। नाउ दिस डिस्क्रिपेंसीज शुड बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर। नेक्स्ट पॉइंट, गैदर एंड मेंटेन ऑल द रिलेवेंट वर्किंग पेपर्स ऑडिट डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन विच द ऑडिट ओपिनियन इज गिवन। यानी उसको सारा वर्किंग पेपर्स ऑडिट डॉक्यूमेंट सारा का सारा उसको इकट्ठा करना है, बिकॉज यही उसका डॉक्यूमेंट है, यही उसका बेस है विच गिव्स हिम अ प्रूफ दैट ही हैज डन वर्क। वर्किंग पेपर शुड बी रिटेन फॉर 7 years बाय द ऑडिटर इन सपोर्ट ऑफ एन ऑडिट ओपिनियन। और जो भी वर्किंग पेपर्स ऑडिटर ने बनाया है इट शुड बी रिटेन बाय द ऑडिटर, रिटेन बाय द ऑडिटर फॉर 7 years। इट इज नहीं, उसको 7 साल तक उसको संभाल के रखना है, 7 years तक उसको रखना है, क्योंकि ये इसका प्रूफ बनेगा। अगर कोई भी एलिगेशन या कुछ भी प्रॉब्लम आया तो दैट वर्किंग पेपर इज वेरी हेल्पफुल फॉर द ऑडिटर। इफ यू लर्न समथिंग, प्लीज गिव दिस वीडियो a thumbs up. To see more videos like this, make sure that you hit the subscribe button. If you want me to cover any other topic on this channel, write it in the comment box. This was all I have today. Hope you like it. Have a nice day. Bye.